up for an engaging and informative session that promises to enhance our understanding and appreciation for homeopathy in the modern medical context. Without further ado, I would like to invite our guests for the lighting of the lamp ceremony. Padamasana Ya Brahmachuta Sankara Prabhuti Deve Sada Vandita Samam Patu Saraswati Bhagavati Nise Sajadya Paham. Without further ado, I would like to introduce our very special guest. So it is my great honor to introduce Dr. Raj K. Manchanda, who is a prominent figure in the field of homeopathy, whose contributions have significantly advanced the practice and understanding of this traditional form of medicine. With over 35 years of professional experience, Dr. Manchanda's career encompasses a vast spectrum of roles, including that of a clinician, academician, researcher, and administrator. Dr. Manchanda graduated as a homeopathic physician at the Nehru Homeopathic Medical College and furthered his expertise with postgraduate studies in homeopathy from Dr. MPK Homeopathic Medical College. His commitment to lifelong learning is also evidenced by his MBA in Healthcare Administration from the Faculty of Management Sciences at New Delhi University. Formerly the Director General of the Central Council for Research in Homeopathy under the Ministry of AYUSH Government of India, Dr. Manchanda has been instrumental in propelling homeopathy to new heights through his visionary leadership. He has a vast experience and special interest in dermatology, a field in which he has made significant contributions, including establishing a special dermatology clinic and co-authoring the textbook of dermatology for homeopaths. His achievements extend beyond clinical practice into realms of significant administrative and academic roles. He has been a guiding force in establishing new dispensaries, developing homeopathic colleges in Delhi, and supervising various research projects in areas like dermatology, tuberculosis, and thyroid disorders. Dr. Manchanda's dedication to homeopathy is further evidenced by his numerous awards, including the prestigious State Award from the Government of Delhi and the Award of Recognition from the Robert Bosch Foundation in Germany. His extensive publication record with over 100 peer-reviewed papers demonstrates his commitment to advancing homeopathic knowledge and practice. We are very privileged to have you, sir, for our faculty development program, and we are honored to have you take your time for us. Thank you, sir. Furthermore, I would like to introduce our very own Dr. Purav Desai, who is the Dean and Principal of JHMC. He is highly qualified and experienced and is working actively
in the academic and administrative field of homeopathy at the national, state, and university level. He is an empaneled assessor for the National Accreditation Board for hospitals and healthcare providers for AYUSH hospitals. He is keenly associated with Homeopathic Medical Association of India. Presently, he is the executive member of the Gujarat State Branch, and he has worked as secretary at the Vadodara unit and that unit was awarded the best scientific unit of India. He has worked as the president of the HMAI Vadodara unit during the academic year 2010 to 2012. He is vigorously participating in various homeopathic medical camps organized by different charitable trusts and organizations. Without further ado, I would like to invite Dr. Parul Desai to come and say a few words. Good morning, one and all. Respected learned team, our today's guest, Dr. Manchanda sir, the dignitaries on the dais, Dr. Yato sir, Vijay sir, Panda sir, off the dais, dignitaries, Dr. Udecha ma'am, Vishal sir, Nanda ma'am, the senior teachers of JLHMC, PIHR, EHMC, RHMC, and also many other institutes of Parul University were jointly together to come up with a good outcome. So I heartily welcome you all. So first thing, if you see, research is a very, since I think since last 1 year, research is a big question mark and a big word for the Parulites. And what I found to be required in homeopathy, the research, actually we need to research ourselves, where we are lacking, where we do something. If any science exists, directly or indirectly, they are following the science. But there are something missing, and that is to be come out. We need to touch those things to in the form of evidence, and probably we all are gathered here. Probably we all have some points we noted, but how to publish them, how to come up with this evidence-based thing, probably we are lacking in that area. And the experience and learned people, and with the collaborative activity of all of you, we can definitely come out with a good outcome. So with this spirit, I welcome you all, and hope the journey what we have begun, that will go smooth with good success. Actually, there is the quote, uh, good beginning is the half success, and probably we achieve that good beginning. So let's hope for the best. Right? Thank you all. Thank you so much, sir. Before you sit down, Dr. Parul, sir, may you please do us the honors of felicitating our guest. Sir, Without wasting any time, I would like to invite our special guest, Dr. Raj K. Manchanda, to come and serve what he has cooked for us today. So all the dignitaries on the dais, of the dais, I'm really happy to be here again, once again. Last month we interacted briefly, and I'll be here again. So I'm quite happy to see the progress made during this 1 month. That they have already issued, university has issued special by OM that henceforth our homeopathic group and Ayurvedic group and allopathic group, they will be working together, at least in the field of research and clinical care. I'm really happy that such orders and directions have been issued. So as regards
today's program is concerned, I often see, I would just like to introduce myself to all of you and would also like to know something about you. Only then we can allocate appropriate assignments to all of you. I also would like to know in today and tomorrow that what kind of work you are already doing in your clinical setting in research field. So this will be briefly I'll be doing. So first of all, I'm just going to distribute few some formats. So आपने इसको भरे अपने अपने आपस में डिस्कस ज्यादा नहीं करना और जो मन में आए इसमें कुछ गलत सही कुछ भी नहीं मुझे एक कॉपी मुझे जब तक ये फॉर्मेट आपको बांटते हैं एक इसमें पहला पन्ना आप छोड़ दीजिएगा उसको अभी पढ़ना भी नहीं हो बाद में पढ़ेंगे उसको इस पूरे क्वेश्चनर में करीब करीब 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन मेरे को स्टेटमेंट्स हैं आपको देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपके ऊपर कितनी एप्लीकेबल जो स्टेटमेंट आपके ऊपर पूरे तरीके से एप्लीकेबल है उसको 5 नंबर दे देने और जो नहीं एप्लीकेबल उसको 0 दे देना और बाकियों को उसी के बीच में ध्यान ये रखना है कि हर एक स्टेटमेंट के 2 आंसर हैं और दोनों आंसर्स का टोटल 5 होंगे एनी डाउट अबाउट इट पढ़ना शुरू करें तो बताइए सारी लाइफ सिचुएशंस हैं जो आप रोज देखते हो कॉलेजेस में अपनी पर्सनल लाइफ में अगर जॉब लाइफ में ये सारी सिचुएशंस हैं तो इसमें आप कैसे रिएक्ट करते हो आपने सिर्फ वो उसको अपने आप को ग्रेडिंग करनी है उसके अंदर एक वैल्यू असाइन करनी है आपको और अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी समझ आता है तो जितना समझ आता है उसके हिसाब से उतना ही कर देना कोई जरूरी नहीं है कि आपको 100% हर बात समझ ही आएगी क्योंकि फिर इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में
तो आज का टॉपिक हम लोगों का ये रहेगा ब्रॉडली डिस्कशन का।
जब कंप्लीट हो जाए तो मुझे बता, जिसका भी हो जाए। जिसका कंप्लीट होता रहे बता। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कंप्लीट करके ना जो लास्ट पेज है ना इसकी अपने पास फोटो खींच लें और फिर ये आपसे वो लेके ये दे देंगे नया वाला फॉर्म एक और। हाँ हाँ हाँ, जिसका भी होता है बस आप अपना बच्चे इनसे दूसरा ले उसके वो अपने ऊपर नाम भी लिख लेना, जो भी इंस्टीट्यूशन है अपना नाम लिख लेना, ताकि जब डेटा एनालिसिस करेंगे तो रिसर्च एनालाइज कर पाएगी कौन सा किसका, ठीक है। एंड वी कैन गिव यू फीडबैक अकॉर्डिंगली। जनरल फीडबैक तो अभी हम दे देंगे, फिर स्पेसिफिक फीडबैक भी देना होगा।
दूसरी अच्छा एमडी के पास हेलो, हाँ राइट। जिसका भी पहला वाला फॉर्मेट खत्म हो जाएगा तो एक फॉर्मेट और आपको देंगे, वो भी एक 15 क्वेश्चन है। उसमें 0 to 4 अपने आप को रेटिंग करें कि हाउ मच दोस 15 स्टेटमेंट आर एप्लीकेबल टू यू। इसको कुछ नहीं आता। Any difficulty anyone is facing in respect of any question? इधर देखो। इधर एक्टिविटी यहाँ हो रही है, इधर तो कुछ होने रहा है। अच्छा, जब ये दूसरा फॉर्म भर लेंगे तो इसका भी नंबर डालने शुरू मत करना एकदम पिछली साइड का, मैं बताऊंगा कैसे करना है। One thing we need to remember, there is no right or wrong answer. Every answer is unique.
अच्छा, कुछ लोगों ने मेरे ख्याल सेकंड वाला भी भर लिया होगा, आई कैन सी। तो वह बैक साइड को टर्न कर दो जिन्होंने भर लिया है, और जिन्होंने नहीं भरा पर एक बार सुन ले। आपके पास एक ऊपर एक टेबल है, कन्वर्जन टेबल। तो जो क्वेश्चन स्टार वाले हैं ना, उनको कन्वर्ट करके नीचे नंबर लिखना है, और जो डायरेक्ट है उनका सिर्फ डायरेक्ट लिखना है। आप टेबल देखें, कन्वर्जन टेबल है, जो स्टार क्वेश्चंस हैं उनका कन्वर्ट करके लिखना है, बाकियों का डायरेक्ट लिखना है। एक बंदा बताता रहेगा। फोटो लीजिए अपना, और लिस्ट में 1 2 3 4 ऐसे इसमें ना बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, जो पहला आइडिया आया दिमाग में बस वही लिखते हैं। अगर बहुत ज्यादा सोचोगे तो सही नहीं लिखोगे, वो सही पिक्चर नहीं आएगी, आपको खुद ही नहीं पता लगेगा। बाद में आप खुद रियलाइज करोगे कि भाई ये टेक्निकली ठीक नहीं बना हमारा।
प्रैक्टिस वाले का भी डेटा अपने पास रखो और फिर keep this data with you because this will help you in the process. आप टेबल देखें कन्वर्जन टेबल है तो स्टार क्वेश्चन है उनका कन्वर्ट करके लिखना और टेबल देखें कन्वर्जन टेबल है तो स्टार क्वेश्चन है उनका कन्वर्ट करके लिखना पता लग रहा है margin to art novel. So we have to work on that area, on their personality. मतलब एक बात सिर्फ याद रखना कुछ सही और गलत कुछ भी नहीं है जो है सो है ठीक है ओके बुला के हाथ पर ब्लॉग देते रहो ताकि वो पता you will start to उसका फोन लगाते ही रुक जाएगा कितना सेकंड का डिले चल रहा है वो तो दिखेगा वहाँ कट कर दे
अरे नहीं यार, नहीं चल रहा लाइव भाई, सब ट्राई कर लिया, मेरा नेट खत्म हो गया है, नेट पे चल रहा हटाया है चार्ट किसने लगा। So I hope most of us have been able to complete. हाँ? एक दो रह गए, कोई बात नहीं. Most of us have followed. अपना रिकॉर्ड अपने पास रख जरूर लीजिएगा. So that will help you in understanding. इसमें तो बेटा लास्ट वाला ये इम्पोर्टेंट है. अभी आपको वापस भी देता हूँ. हटाया है चार्ट किसने लगा। But it will help you in understanding. May not be after return. So friends, not today. No, please kindly let us start now. Today, what we have done, you have filled up two forms. One form related to Johari window, and the other one is on personalness, effectiveness scale. What we are trying to see. इसके ऊपर मैं एक हिंदी में आपको एक बात बताता हूँ. बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले आपको, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा नहीं. ये है सारा पर्सनल इफेक्टिवनेस का. होता क्या है कि हम सिर्फ बाहर देखते रहते हैं, अंदर नहीं देखते हैं. इंपॉर्टेंट है अंदर देखना. अंदर हम देख तब सकते हैं जब हम अपना सेल्फ एनालिसिस करें, वेयर वी स्टैंड ऑन दीज पैरामीटर. आज हमने सिर्फ ये दो पैरामीटर्स वर्कआउट किए हैं कि हम सेल्फ डिस्क्लोजर में कैसे हैं. कोई हमें फीडबैक देता है तो हाउ वी रिएक्ट, वेयर वी आर,
हमारी परसेप्टिव सेंस कैसी है, ये 3 एस्पेक्ट्स हैं। तो इसके ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। आपने जैसे अभी आप लोगों ने जो एनालिसिस किया है, आप अपने हिसाब से अपने पेपर के ऊपर एक जोहारी विंडो बना के रख लो, अपना स्केल थोड़ा सा बना के रख लो, अपने माइंड में रख लो, पेपर में रख लो, जैसे भी रख लो। दिस विल गिव यू आइडिया। और आप देखोगे दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ना, आपका घर परिवार, आपका क्लिनिकल सेंस, ये मैंने स्पेशली लिखा है, टीचिंग, पेशेंट केयर एंड रिसर्च। टीचर हैज टू बी ए पर्सन who understands about himself also, अपनी shortcomings भी वो जानता है और अपने students की shortcoming भी जानता है और strength भी जानता है। Only then you can appropriately communicate with most of the students. 100% फिर भी नहीं। Are you okay on this? So I'll be talking on three aspects and giving you in between anecdotal examples of teaching, patient care and research. So what is this Johari window? It is a simple and useful tool for understanding and training self-awareness. It is a tool for understanding about our own and is very good for personal development, improving communication skills, interpersonal relationships, and group dynamics, team development, and intergroup relations. All of you, because I understand today we are having most of the persons are from homeopathic schools and colleges and faculty and PG. As I told you in the beginning that Parul University has taken a landmark decision of starting interdisciplinary research. For that, it is very, very important that we should be as effective as possible. And the first step is to know about ourselves. And for that, this session, I have just helped you in understanding about your own self. And if we know about ourselves, we can move fast forward in understanding subject, we'll be good in interaction, we'll be good in interpersonal communications, we'll be good and we know how to absorb criticism, how to reflect on criticism, and how to overcome those kinds of criticism. So this is very important. This was developed by a psychologist in America. Just these are all theoretical things, and PPT will anyway be available with your team, so you can get it. So now, clearly, there are four quadrants, you can see. This one is the open quadrant. Few things about ourselves, which I also know and other person also know. But there are few things which is a blind spots, especially these are non-verbal cues. Like while we are teaching, let me just give example. That what kind of appearance we give to the student, whether it is effective, whether students are able to understand. We are not aware about our own weaknesses. The best way is that what we do, that most of the time after giving lecture, we tell students, "Bhai, aapko kitna samajh aaya?" So what we try to do, we try to reduce our blind spot. Communication is good communication if it is a open communication. Okay? But then comes another aspect of oneself, which only I know. This is what things I know about myself that others don't know. That is a hidden part of everyone.
Many times it's not necessary also to tell that. But sometimes it is important also to discuss that. Especially when we work in groups, when we work in interdisciplinary researches, we need to discuss also that these are the weaknesses within our system. And we don't have answers. We need not keep on putting everything under the carpet. But at the same time, I'll just give you another scenario that you are taking an exam, and instead of evaluating student, you are revealing your own things. देखो मैंने आपको क्लास में वो पढ़ाया था, मैंने वो किया था, I have done that, I have done that. But you are here for interviewing the student for assessment. You are not here to take out hidden things जो neither the student knows nor you are, but आपको अपनी बातें बस याद कुल के आ रही हैं अंदर. So all these characteristics are important to certain extent, and how to balance it out is most important thing. And this is how our personality is determined. How open we are, it is necessary to keep certain secrets. If you will reveal those things prematurely, that may create problem for the institution, class, and even in the family. So whatever I'm going to discuss with you is for your own personal improvement. It is not for doing anything else, It's just for your own personal improvement. And many times people say that, let us come and discuss. This is what this work is going to, this scope, your special section is doing. That what we are doing, we are working on this area, largely unknown. There are many things on conventional side, on Ayurvedic side, on homeopathic, where we don't know about each other. Unknown. Neither they know nor we know, but when we discuss, we search out PubMed, we search out more data, we search out more researches going on elsewhere in the world, something hidden ideas will be generated. So that is a shared discovery. So all these four quadrants are important. What is obvious to me and everybody else is open. मेरा नाम ये है, मैं ये हूँ, मैं ये सब जानते हैं, सारा कुछ लिखा हुआ है. पर मेरा पैन नंबर क्या है, मेरा आधार कार्ड नंबर क्या है, वो कुछ लोग जानते होंगे. Hidden. But there are certain things what others see in me, but I don't see in myself. मेरी टाइट टेढ़ी हुई है, मुझे पता ही नहीं. Others can see. Similarly, in our personality also, many times, few points are within our own personality which we don't know, and we don't take feedback also. So all our action, activities, all depends upon this kind of things, So this is these are all four areas. This open area is known as arena. This is known as blind spot. This is facade, closed or hidden area, unknown and dark area. And this is how Johari window. It's a psychological test to understand your own self, your own way of working, your own way of thinking, your attitude, your behavior, your interpersonal connections. Okay? So let us move further. What we need to do. So what is important, if you want to increase this arena, you need to take solicit feedback. You need to take feedback about your own work, about your own thinking. And at the same time, give feedback on. Self-disclosure. ये नहीं कि उसी से ही लेते रहो, अपना भी बताओ. So it has to be two-way communication. So let us see what happens.
This is ideal window where arena is big. We should be as open as possible. But it never happens. Not all the time. But for an interviewer, it is important to have that kind of facade. He cannot keep on revealing hidden things. So this is the personality of an interviewer where he has a large facade, large hidden part. I'm just telling you basic, first conceptually, you have to place your thinking. Then, bull in China shop. A big blind spot, big blind area. He himself doesn't know. This is the story of bull in China shop is the story of, I think, 17th century when those markets were there and bull and used to enter. हमारे यहाँ तो आजकल भी होता ही है. So he doesn't understand. He's not taking any feedback. He just so if you have a large blind area, behavior like कहते हैं loud mouth है जी. उसे पता ही नहीं है. We have certain politicians also in that concept. उनको पता ही नहीं है कि जो वो बोल रहे हैं बड़े एग्जाम्पल अगर आप इस सारे कॉन्सेप्ट को पॉलिटिक्स से समझोगे तो बड़ा जबरदस्त बड़े क्विकली समझ जाएगा. तो ये देखो आपने कितनी बार देखा प्राइम मिनिस्टर को गलती करते हुए. या तो वो नहीं बोलेगा या बोलेगा तो पूरा होमवर्क करके बोलेगा. और व्हेन ही विल टॉक हिज बॉडी लैंग्वेज एंड हिज वर्ड एवरीथिंग विल बी इन वन लाइन. ऐसा नहीं होगा कि ध्यान कहीं हो रहा है बोल कुछ और है. ऑफ द कैमरा कभी हो जाए तो हो जाए, ऑन द कैमरा तो हम लोगों ने देखा नहीं. पर और सारे पॉलिटिशियंस का आप देख लो, कोई किसी चीज में कहीं है तो एंड वेरी मोस्ट फेमस जिससे वो कम्पीट कर रहे हैं बुल इन चाइना शॉप. पता ही नहीं है भैया कि दुनिया कहाँ जा रही है, आप क्या बोल रहे हो, चाह क्या रहे हो, पर चली जा रहे हैं. सो ये बड़े आराम से समझने की बात है. Then it is a turn. We are large unknown area is there. कोई नहीं जानता. Large unknown area, silent observer, neither gives feedback nor takes feedback. तो ये चार broad areas होते हैं. Open, bull in China shop, loudmouth, facade, and unknown. Are we okay? तो आप अपनी अपना पहला वाला जोहारी विंडो को अपना अपना सोचो एंड यू सी वेयर यू आर. जैसे 50-50 है तो आप कोई 25 पे होगा, कोई 26 पे होगा, कोई 30 पे होगा सेल्फ डिस्क्लोजर में. तो ऑल इज ऑल राइट. आपको क्या करना है, उसको एक्सपेंड करना है जितना एक्सपेंड कर पाओ बाय कॉन्शियस एफर्ट. सो योर सेल्फ डिस्क्लोजर विल बी ओके, योर feedback, solicit feedback will be okay. So your personality will improve over a period of time if you start doing this consciously. So उसका advantage क्या होएगा कि हमारा टीचर ज्यादा इफेक्टिव होएगा. You will be more accurate in your clinical work with the patients. क्योंकि पेशेंट से कई बार देखा होगा आपने डॉक्टर, मैंने देखा कि पेशेंट अपनी बात बता रहा है, डॉक्टर अपनी बात बता रहा है. वो अपने घर के लिए बात लेके बैठा हुआ. वो आज मेरे घर भी यही हुआ. अरे भैया, you have to have a large facade. Patient is here for disclosing. Self-disclosure is not desirable. So we have to work with this mindset. When we are doing research, we cannot have large unknown area. But we can have group discussions to find out new ideas which we even don't know and nobody knows. So every area, every concept has its own value. Okay? So we need not to be turtle-like also. So if you find that you are very low in both self-disclosure also and this, then you have a large unknown area.
So you have to work on that aspect of your personality. In my next class, I will be telling you how these personalities are formed, what are those ecosystems, and how to unblock those blocks also. Now there is another issue. This was about our first format, Zohari window, that how much we are good in self-disclosure, how much we are good in soliciting feedback. Although the third aspect is enhancing perceptual skills, knowing and perceiving oneself accurately. This is one aspect. जितना खोजो अपने आप को जितना खोजोगे उतना अच्छा है. Being empathetic. You can only be positive about taking feedback if you have that kind of empathy feeling within you. Then having positive attitude, ये सारी अच्छे शब्द हैं, पर actually इसको develop करना अपने अंदर एक art है. But we can develop, कईयों में लोगों में naturally भी आ जाती है. Enhancing one's self-concept. This you can do by taking feedback. कि क्या गलती थी आज मेरे लेक्चर में, क्या बात थी, क्या बात और ज्यादा जानना चाहते हो आप, so next time you will be more prepared about that. So making a conscious effort to avoid the possible common biases in perception. कई बार ये तो ऐसा ही है, ये तो वैसा ही है, ये तो यूनिवर्सिटी ऐसी है, यहाँ तो होता ही ऐसा है, तो इस तरह के biases और कुछ बने होते हैं ideas. So we have to overcome. इस biases के ऊपर एक separate ही lecture है, तो we'll do something sometime. But biases are, we have to overcome those, and then communicating with others to erase incorrect perceptions also, and avoiding attribution. क्योंकि जहां attribution आ जाएगा ना, positive attribution is good, negative attribution will, ये हो ही नहीं सकता जी आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एंड एलोपैथिक सारे एक साथ बैठ के काम कर पाए, इससे attribution. And we have no idea that दुनिया के कई जगहों में एलोपैथिक डॉक्टर ही होम्योपैथिक डॉक्टर है. जैसे यहाँ पे एक कॉमन इशू है ना कि बड़े सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स इन देयर प्राइवेट प्रैक्टिस आर डूइंग एलोपैथी. यूरोप के अंदर एलोपैथिक डॉक्टर ही होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं जस्ट बाय लर्निंग 500-700 घंटे का कोर्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, फ्रॉम डिफरेंट एसोसिएशंस. हमें पता तो है नहीं, हम सिर्फ अपने आसपास देख रहे हैं, and we have just formulated our vision and we are working with that. So we have to have, so if you want to increase your perceptual skills, you have to focus on these things. And perceiving oneself accurately means आपको अपने strength और weaknesses के बारे में पता. अगर वही नहीं पता तो फिर नहीं कर पाओगे. Being empathetic, दूसरे को भी ध्यान से, अगर मैं उसकी जगह पे हो तो क्या हो, मतलब मैं आज टीचर हूं तो कभी मैं स्टूडेंट भी था. So that thing has to be mind. Having positive attitude. अब फिर वापस मैं वही पॉलिटिक्स से बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा. अब स्टोरी प्राइम मिनिस्टर की स्टोरी सारी जगह, मतलब ये बड़ा केस स्टडी है अपने आप में अगर देखा जाए. बंदा हर बंदे से रिलेट कर लेता है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो पिछड़ा जाति हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो. दैट एम्पैथी कारण कि अगर कोई बंदा, आई वाज जस्ट लिसनिंग समवेयर, उस बंदे ने 50 साल किया यही है. इनिशियली 30-40 years when he was working as a प्रचारक, he was going into the families. मेरे यहाँ 5-7 साल पहले एक प्रचारक आए थे कि जी हम यहाँ आए हैं, ये वो है, तो एक वहाँ वाला बंदा कहता है सर वो जहाँ भी आते हैं खाना वगैरह फिर आप ही को अरेंज करना है, जैसा भी आप घर पे खाते हो, स्पेशल कुछ ये नहीं कि आप बाजार से सारा कुछ मंगाने लग जाना, ऐसा कुछ मत करना, जो आप घर पे बनाते हो बस वैसे ही होता है. बैठेंगे हम लोग, आएंगे, थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे देश विदेश के बारे में और बस खाना खाएंगे और चले जाएंगे.
फिर आ जाओ, कई साल पुरानी बात है। तो अब मैं उस बात को रिलेट करता हूँ, क्योंकि वो तो पता नहीं किस तरह के घरों घरों में घूम घूम के क्या क्या खाया, क्या क्या पिया, पता ही नहीं है। सो दैट so he is and his perception। आप ये देखिए, दो एग्जांपल आपके सामने। एक पंजाब में पॉलिटिशियन लेक्चर दे रहा है, 50 आदमी कट गए, ट्रेन गुजर गई, और लेक्चर कहां दे रहा है? पटरी के ऊपर ही, 10-20 आदमी कट गए, एज फार एज आई रिमेंबर। अगर आप, और दूसरा ये प्राइम मिनिस्टर है कि ये लेक्चर दे रहा है, ये ज्यादा बिजी है उस बंदे से और उस टीम से, और इसको नजर आ रहा है कि वो समुद्र की लहर आ रही, रोक, हटाओ इसको फटाक से, और वो 5 या 7 मिनट में उन बंदों को बचा लेता है जिसका कि एक्सीडेंट हो सकता था। याद है ये स्टोरी को? ये मतलब हाइट ऑफ परसेप्शन। और वो आप सारे पॉइंट्स के ऊपर आप फोकस करो, नोइंग एंड परसीविंग oneself accurately, being empathetic, having positive attitude. As a clinician also, you have to have a high degree of perception about your patient. And this you cannot have unless you have these qualities. Unless we cultivate these qualities, we enrich our personalities with these qualities. Are we okay on it? Positive attitude, empathetic, exact concept of your own self, and moving forward. So, for any communicating, effective communication, what is important is fidelity of communication, economy of language, influence, congruence, and relationship building. ये उसी का ही एक अलग वर्जन है जो पहले वाली जो स्टोरी आपको बताई। If your perceptions are levels are enhanced, you will find that your communication will qualify in all these 5 parameters. Now, what is this fidelity? Let me just share with little bit detail. Now, fidelity of communication is a distortion-free quality of a message is called fidelity. An effective person gets the message across to others with a minimum of understanding. If the gap between that what a person wants to communicate and what the other person understands is large, the effectiveness of the person sending the message is low. तो आपको अगर आपका पेशेंट को देखना है कि उसका लेवल क्या है, आपको अपने ज्ञान के लेवल पे बात नहीं करनी, आपको जिसको आप कम्युनिकेट कर रहे हो उसका क्या लेवल है। Only then your communication will have fidelity. Otherwise it will not have fidelity. आप ऊपर की बात कर करके निकल गए, वो बरसात भाई साहब नीचे ही बैठे रह गए, तो ना तो you will be successful in teaching with the student, nor with this, and research तो possible ही नहीं है। So in all these areas, you need to ensure that high quality of fidelity is required. But now, how to improve that fidelity? How to improve that fidelity? By giving feedback, taking feedback. भाई आपको समझ आ रही है? जो मैंने कहा वो ठीक कहा, तो आपने अपने लिए फीडबैक ले लिया, पूरी बात हो गई, fidelity improve हो गई अगले सेंटेंस के लिए। Are we okay? Next is economy. An effective person uses minimum of energy, time, symbols, and cues to communicate a message that can be understood. A person who spends excessive time is less effective. क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स का, अभी आपके जो प्रो वाइस चांसलर बता रहे थे, स्टूडेंट्स का लर्निंग स्पैन 15 से 20 मिनट का होता है। तो 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आपको कुछ और कंसेप्ट पे आके वापस अपने कंसेप्ट पे आना, ओनली इट विल बी ए कम्युनिकेटिव हाई क्वालिटी टीचिंग। और स्टूडेंट्स आपको फोकस करते रहेंगे, नहीं तो जाते रहते उनका ध्यान चला जाएगा, क्या सवेरे तो ये हुआ था मेरे घर में, आज मुझे वो करना है। So
So कितनी बात करनी है, कौन सी बात कितनी गहराई से पढ़ानी है, that is very important. So economy of word, economy of the language, what you use, all these things are very very important. कई बार आपने देखा होगा कि हम कोई टीचर्स आते हैं, मैंने पूछा भी आज फीडबैक लिया है स्टूडेंट से, आज क्या हुआ भाई इस क्लास में, सर वो अपनी बात कर के चले गए, हाँ जी, और जो सब्जेक्ट को पढ़ाने आया तो उसकी तो सिर्फ 2 ही लाइनें बोली और उसके बाद वो चल पड़े, मतलब लाइक द स्टूडेंट्स आर जस्ट दैट फर्स्ट दे टोल्ड अबाउट द टॉपिक ऑफ टुडे एंड देन इनिशियल फ्यू लाइंस, फिर वो अपनी बातें इधर उधर चले गए, उनका ध्यान उस तरफ चला गया, फिर जो स्टूडेंट ने ये कर दिया, so then they will wash out. So, when we are communicating, when we are teaching, at the same story with the patient, patient इधर उधर सबने ट्रैक पे लाओ while taking history. मैंने देखा कई बार स्टूडेंट जो होते हैं इनिशियल फेजेस में घंटों घंटों पेशेंट्स के साथ बैठे रहते हैं. While it's good, but it is not always good. अगर स्टोरी है तो सुनो, अगर स्टोरी नहीं है तो सीधा सोचो कि ये बंदा लॉबिशियस है, ये है, चलो आगे. उसकी बाकी बातें सुन के क्या कर दोगे, कर तो वो सकते नहीं. So we have to be in all the 3 formats. It is very important. Influence. This is also very important. A communicator achieves the result he intended if he wanted empathetic response, and he achieved that as a result of his interaction, he influenced the other person. अगर इम्पैक्ट नहीं है ना, वो सुनना ही नहीं चाहता, आपका कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं है, इमोशनल कनेक्ट नहीं है, तो कहते नहीं ये इमोशनल कनेक्ट है. तो रिलेशनशिप और इन्फ्लुएंस इस फैक्टर से ऑपरेट होते हैं. An effective communicator integrates both verbal and non-verbal cues. If verbal is not, the speaker's effectiveness will be low. So another is common. Your body language should talk what you want to talk. There should not be conflict, neither in words nor in your body language. And relationship building, communication that contribute to the building of trust and better interpersonal relationship among individuals are more effective than those that do not. But it does not mean कि relationship building does not mean कि रिश्ता ही गाड़ के बैठ जाओ हर पेशेंट के साथ या ये possible. So you have to strike a good balance. We have to be empathetic, we have to be cooperative, we have to be economical. We have to strike a balance of all these factors. And how much balance we can have will tell you about the data that you have filled up for yourself. So how these personalities now evolve? So it is a 3-dimensional cube. What is needed is large arena, small blind and facade area is desirable. It is ideal. But not necessarily always contribute to personal effectiveness, because another aspect is perception. If your perception is low, despite having large arena, you will not be effective. So adding dimension of effectiveness, 3-dimensional cube is there, and this is how it works. So for having good arena, large arena, you have to work on perception also. So there is another dimension of perception, and accordingly, different personalities range low to high. You have seen your second performer, low and high. So low effectiveness, a person who is not economical in communication, is low in fidelity and uses conflicting cues, is of low effectiveness, and high effectiveness is most economical communication, least distortion between what is communicated and what is understood, integrated verbal and non-verbal cues, and contributing to a trusting relationship.
So all this point, effectiveness scale is now another dimension to your communication. One is on disclosure and not to disclose. The other is effectiveness dimension. This determines your different personality. Like if your large blind area is there and effectiveness is high, you will be self-confident. If large blind area is there and effectiveness is low, you will be unperceptive, bull in China shop. Small blind area with high effectiveness is perceptive. तो गलत कुछ भी नहीं, हर बंदे का रोल है. But what we can do at an individual level to be more open with highest level of effectiveness. Because if you have that kind of flexibility, आपको ये भी मालूम है कि आप सीक्रेट कब रखना है, कब क्या बोलना है, तो पहले उस रेंज तक चले जाओ, फिर अपने आप को इन सारी पर्सनैलिटीज में अपने आप को मूव करते चले जाओ. Sometimes you have to be self-confident, you have to be perceptive, you have to be cautious also sometimes. So nothing is wrong. Are you okay? So if your closed area is large and you are high in perceptive, high in effectiveness, you are a good listener. Large closed area, low in effectiveness is secretive. What is that? So what we are having? We are having large closed area with low effectiveness. Then small closed area, high effectiveness is frank. And small closed area and low effectiveness is egocentric. गलत कुछ भी नहीं है, हर एक का अपना रोल. Then small arena with high effectiveness is task oriented. उनको सिर्फ टास्क सीधा, फीडबैक इससे कुछ लेना देना नहीं. इफेक्टिवनेस आई है, जो मैनेजमेंट ने कह दिया वो इंप्लीमेंट होगा, चाहे इधर हो जाए दुनिया या इधर हो जाए दुनिया. उन्होंने ना फीडबैक देना है ना लेना है, उनका काम सीधा टास्क ओरिएंटेड. ये टास्क है, दिस टास्क हैज टू फिनिश, आर्मी लाइक काइंड ऑफ थिंग. ब्रेन ऊपर वाले लगा रहे हैं, हम नहीं लगा रहे. Are you okay? Just example आपको. And but when it becomes low, close, sometimes you will find your superiors are very close and are effective in जो टास्क ओरिएंटेड होएगा वो इफेक्टिव होएगा, उसके congruence वो सारी बातें सही होंगी. Are you okay? And then large arena and with low effectiveness is superficial and large arena with high effectiveness is open. So these are all different personalities. We all can further discuss these personalities. A self-confident person, a person with large blind area and high effectiveness, he may not be only with strength, not with favor of the human cancer mindset. Missing है. Unperceptive, a person with large blind area and low perception to a non-verbal cues that patient may send, people may send about his behavior. वो perceive नहीं करते, unperceptive. The perception is low. उनके सामने कुछ हो जाए तो अच्छा हमें पता ही नहीं लगा, अच्छा ये हो गया, अच्छा आपकी क्लास में ही हो रहा था, वहां बैठे हुए थे, अच्छा ऐसा हो रहा था मेरे पीछे. आप होते नहीं टीचर सामने आए अपना पढ़ा तो they are unperceptive. Perceptive. A person with small blind area, high effectiveness is quite perceptive of verbal and non-verbal cues. His perceptiveness helps him to pick up such cues quickly and use them to change his strategy of interaction and hence his effectiveness.
Are you okay? So, overtly cautious, a smaller blind area knows more about his strength and his limitations. However, if such a person has low effectiveness, he is more likely to be overtly concerned with his weaknesses and he is to concentrate on his strength. So cautious, कुछ करते ही नहीं है, अंडरटेक ही नहीं है. हम बात ही नहीं करेंगे जाके कन्वेंशनल वालों से, हम बात ही नहीं करेंगे उससे. अपना एरिया छोटा है, बताने नहीं जाते, डिस्क्लोज नहीं करना. So this is how it works. Okay? Good listener, a person with large closed area and with high effectiveness is likely to be a good listener. Instead of giving his opinion, he listens to the opinion of others and makes decision based on his own judgment. Patient. When we listen to patient, we should be good listener. So all these personalities change. ऐसा नहीं है कि एक आदमी को आपने ब्रांड कर देना, एट्रीब्यूट कर देना कि ये तो ऐसा ही है, ऐसा नहीं है. Secretive, a person with large closed area and with low effectiveness is likely to be secretive. Other person may wonder what criteria he uses to judge them, to what he expects from them. दूसरे को पता ही नहीं होता है चाहता क्या. You have to be more open, more clarifying. Frank is other way around. That small closed area with high effectiveness is likely to be quite outspoken and frank. He gives feedback and expresses his opinion and point of view without any inhibition. जहाँ पे नहीं भी बोलना वहाँ भी बोल देना. So वो एक, you have to be very, very, very specific about this. Then egocentric, a person with small closed area but with low effectiveness may tend to talk excessively about himself, his achievement, his talent, his experience, and even his personal life. This is egocentric. वो अपने उसके लिए सारा जान, सारी दुनिया उसके आसपास ही है और कोई कुछ नहीं है. This is egocentric. Task-oriented, large arena can be quite effective in a limited way. So hard task master. You can be like that also. Closed, small arena and low effectiveness is a closed person. And superficial. He is although very open, but depth in it. Effectiveness, congruence और वो सारी बातें. Otherwise, person is open. An open person, a person with large arena and high effectiveness is open. His opinions are given freely and are well understood. He feels free to communicate his impressions and he gives feedback to others with a sensitivity that they appreciate. Similarly, he is eager to receive feedback from others. So this is openness and we should try to be as open as possible, and this is the how to move around it. For openness, we need to reduce our closed area. Perceptiveness reduces blind area. And for communication, the three works in combination, not in isolation. Openness, perceptiveness, all these things work in combination, not in isolation. So this is how this cube is. That we should always try to keep this arena as large as possible to reduce this blind spot. Giving feedback, reduce this hidden area as far as possible, and try to work on your communication skills, considering those 5 points: fidelity, congruence, relationship buildings, and all. Are we okay? And we need to try to move from less effective to more effective. 3D, that we need to be self-confident, perceptive. All these are good things, and all these things are. So we have to focus. While we have to focus on our taking feedback and giving feedback, we have to focus on our effectiveness to be
appropriate personality as per the requirement of the situation. So this is all I just wanted to share with you as regards this concept. Now, if you have any questions, you're most welcome about these issues. Whatever you want to ask, I'll be very happy to answer. आप लोगों ने form भरा. It was just an exercise for your own self and for ours also. एक बड़ा प्रश्न है कि मैं क्यों सिक्रेटिव क्यों, मतलब कि मेरा ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं. तो ये सारा जो आज हम है ना, it is sum total of what we have been doing. Okay? बचपन कैसा रहा, ग्रूमिंग कैसी रही, तो वो हम अगली बार डिस्कस करेंगे. उसके लिए एक अलग फॉर्मेट है. That is to understand different ego states of the person. कौन सी कब प्ले कर जाती है. तो एक किताब है कि यू आर ओके करके, अगर कभी पढ़ी हो तो उसको थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो अगली बार और अच्छा समझ आएगा वो चीज. So this is all about high quality communication. अगर आपको सक्सेसफुल होना है किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, you have to have increase your personal effectiveness quotient. स्कोर जितना हाई होएगा उतना अच्छा है. आज जो भी है इट्स ओके. दैट अब बताइए जो डिस्कशन हुआ कितना यूजफुल रहा. पीछे से फीडबैक शुरू करते हैं. एनीबॉडी फ्रॉम, बोलिए बोलिए. अब तो आपको पता ही है कहां कहां पर है. तो इवन इफ जिनका सिक्रेटिव है दे शुड कम आउट. वी वांट टू शेड दिस सिक्रेटिव नेचर फ्रॉम टुडे. हाँ बोलिए, आप बताइए कुछ. So when I got that, I'm standing. आप मतलब बेशक आप फीडबैक दीजिए. नॉट नेसेसरी कि आपका कोई क्वेश्चन ही होना है. नॉट नेसेसरी. आप लोग सारे देखो अपना अपने सारे टीचर्स हो, सबको कुछ कुछ सालों का एक्सपीरियंस है. तो इस सारे लेक्चर को क्या लगा, कोई यूजफुल है नहीं है, इस तरह की डिस्कशन और हमें आगे करनी है नहीं करनी है. तो आई वुड जस्ट लाइक टू नो फीडबैक फ्रॉम यू. Thank you very much, sir. So the test was very effective, and actually it will describe whatever the personality I have exactly same. So I'm standing on the middle of that 23 and 26 score. So yes, I will very much clear about that on which particular part I want to work. Sometimes that openness are not going to be there. There's some whatever the study that I have taken, according to that it will come to the mind, financial and everything. So where I need to push myself to be as an open communicator, and that it will second seat I got the result as a secretive, and it is in a middle, effective and secretive on that particular age. So yes, if I'm going to work on that, opening that arena towards that, pushing towards those blind spots. So yeah, it's going to be very much effective. It was very well like test that will actually tell us that what you are. So yeah, very effective for us. थैंक यू. एनीवे आप जो बोला अब फीडबैक दीजिए. मतलब इसको कोई क्वेश्चन नहीं है. आपको क्या फील करते हो, टेस्ट भरा, और जरूरी भी नहीं है कि जैसे इन्होंने तो बता दिया मैं सिक्रेटिव था. नॉट नेसेसरी. आल्सो यू कैन गिव अदरवाइज आल्सो फीडबैक whether this type of discussion has anything to do with medical schools, anything to do with your teaching curriculum, whatever you are doing. मैम हमारी रिसर्च की कोऑर्डिनेटर हैं, आप बताइए मैम कुछ आप भी ज्ञान दीजिए. This test really remain good, which gives some introspection that in which area one need to focus more, particularly the things which you have discussed, that how you can be more effective while you are there in the classroom. That is a very good learning. Thank you, sir. Like this model really helps us in our day-to-day life, both professionally as well as personally. This is what I felt, and so this question was very personally to me. Thank you, sir. बोलिए जब सभी दे दो फीडबैक थोड़ा थोड़ा जी. देखो पन्ना निकाल लेंगे.
एनीवन, बोलिए बोलिए, आप कहाँ से हैं, आप बताइए कौन से कॉलेज से हैं? अच्छा चलिए, अब लेटर से फर्दर फीडबैक लेते हैं। लाइक मेरा वीडियो माइक आ गया, दूसरा माइक आ गया। अल्लाह नो, आप में से अब कितनी जो फैकल्टी है, आप में से कितनी फैकल्टी इंटरेस्टेड है कुछ रिसर्च टॉपिक पे काम करने के लिए? हाँ जी, जरा हाथ पूरा खड़ा, तो मतलब सारे के सारे इंटरेस्टेड है रिसर्च के अंदर, तो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। आप तो, आपने तो करवाना है। हम स्टूडेंट्स में कितने लोग इंटरेस्टेड? एक तो है कि हम लोग सिर्फ एमडी लेने हैं, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। राजे बोलिए, क्योंकि देखो, if you really want to work in this area, you have to work first on your own self, on your personality, on your knowledge base. And the third aspect of this is time management. कि आपको नॉलेज तो सब्जेक्ट की आनी होगी, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर दैट। नॉलेज आपको आनी होगी, ऑनेस्ट आपको होना होगा, एंड कम्युनिकेटिव आपको होना होगा, रिटर्न में भी, बोलने में भी, बात करने में भी। शाइनेस आपको छोड़नी होगी जितनी छोड़ सकते हो, मतलब बदतमीज होने की भी जरूरत नहीं है, मतलब अगली बार आए सारी तो one has to be very careful about that, तो वो करना होगा। और जो लास्ट पॉइंट है which is on time management, तो जस्ट टाइम मैनेजमेंट में another 5 मिनट लेता हूँ, 5-7 मिनट। So there is a book which has helped me, Eat That Frog। कितने लोगों ने पढ़ी हुई है एक बार? हाँ, तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ी तो थैंक यू, एक ने पढ़ी हुई है। So it's a very good book, 80-20 formula. This gives you idea that for being, if you want to be effective, you have to work in a systematic manner. Without being systematic, आप effective नहीं हो सकते। And systematic means you have to set the table. You have to define your goal clearly and understand what needs to be accomplished. आप चाहते क्या हो? हर दिन, हर मोमेंट आपको एक प्लानिंग के साथ ही मूव करना पड़ेगा। अब आपने हाथ तो खड़ा कर दिया कि हम सारे रिसर्च करना चाहते हैं, तो फिर नेक्स्ट स्टेप बहुत जरूरी है टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि जितने भी टीचर से मेरा इंटरेक्शन होता है वो कहते हैं हमारे पास रिसर्च का टाइम ही नहीं है। What we are doing, हमारे पास या तो काउंसिल के काम इतने आए हुए हैं, कमीशन के काम इतने आए हुए हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव काम हमारे पास इतने हैं, उधर से पेशेंट का होता है, उधर से क्लास लेने होते हैं, वेयर कम्स ये बेचारी रिसर्च आखिर में पड़ी हुई है। तो अगर आपको रिसर्च के लिए टाइम निकालना है, तो आपको इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट करना ही होगा। There is no other way out. Otherwise रिसर्च के लिए किसी के पास टाइम, क्योंकि रिसर्च के जो रिजल्ट्स आते हैं ना वो बड़ी लेट आते हैं, कई बार आ भी जाते हैं। पॉइंट इज अप्लाई 80-20 रूल्स, आइडेंटिफाई द 20% ऑफ टास्क दैट कॉन्स्टिट्यूट 80% ऑफ योर डिजायर्ड रिजल्ट एंड फोकस ऑन दैट। तो अब आप रिसर्च को कहां डालते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अदर इज कंसीडर द कॉन्सिक्वेंसेस, consider immediate and long term effect of tasks and prioritize those with significant impact on your goal। तो जो लार्जर रेडार है आपके इंस्टीट्यूशन का, तो मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूं कि आप जितने भी अपने अपने इंस्टीट्यूशन, अपने अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो, आप अपने अपने डिपार्टमेंट का एक गोल सेट करो और उसके हिसाब से अपना सब कुछ करो। एंड दैट गोल should be according to the larger picture of the university goal। यूनिवर्सिटी चाहती है, जो मुझे आज सवेरे बताया गया है, कि we want to shed the image of only giving education, we want to be a research oriented education।
जहां तक मेरी बात है, I started working on this project of research-oriented education way back in during my college days. All those things are okay, but especially when I became Director General. So one of the problem I faced that we have limited pool of units, limited number of officers, and limited number of patients. Whereas our institutions across India have lot of potential. So we gave research-linked education. So today I was very happy to meet your Pro Vice Chancellor in the morning, and he told straight away, look, now the management and everyone is every day talking of research, research, and research. So I thought this is the right time. I have started helping the university in this process. But for that, time management is key. And consider the and practice creative procrastination. What is it? Creative procrastination. Intentionally delay low value tasks and focus on high value tasks. यार ये कल कर लेंगे, आज ये करो. तो वो वैल्यू किसको देती हो? That depends upon. तो इसके लिए बड़े सिंपल इस किताब के अंदर ही आप पढ़ोगे कई सारे मेथड हैं. ABCD मेथड क्लासिफाई कर लो अपने काम को. Slice and dice method. Then breaking your large task into smaller actionable points. पहले 3 काम मैं करूंगी. तो हर तरीके के फॉर्मूले हैं. आपको जो फॉर्मूला अच्छा लगे आप अडॉप्ट करो. फोकस ऑन की रिजल्ट एरिया. सबसे ज्यादा रिजल्ट किसके हैं? लेट मी फर्स्ट फोकस ऑन दैट. अभी जब आपको जैसे प्रोजेक्ट्स पिकअप करने हैं फॉर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, तो कैसे प्रोजेक्ट पिकअप करने हैं, क्या करना है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ये सारी सोच आपके दिमाग में होनी चाहिए. अगर नहीं होगी तो कोई आपको गाइड भी नहीं कर सकता. फिर क्या होगा? एक गलत रास्ता हम ले लेंगे और फिर आउटपुट उतना नहीं निकलेगा जितना निकलना चाहिए. सो प्रिपेयर थॉरोली. Prepare thoroughly involves taking time to plan, gather necessary resources and establish a clear understanding of that. आप करना क्या चाहते हो? बार बार रिसर्च में एक ही क्वेश्चन पूछते हैं. जब हमारे पास भी फंडिंग के लिए प्रोजेक्ट्स आते थे, हम एक ही बार पूछते हैं, वापस आ जाते हैं, आप करना क्या चाहते हो? कई बार उसका ही जवाब क्लियर नहीं होता. हमने इधर से सुना, उधर से सुना, पैसे बट रहे हैं, हमने एक प्रोजेक्ट बना के डाल दिया. ऐसे नहीं होता. So leverage your special talent. आपकी क्या स्पेशलिटी है? आप क्या कर सकते हो? क्या पॉसिबल है इस यूनिवर्सिटी में? किस तरह के पेशेंट आते हैं? रिसर्च उसी पे करोगे. किस तरह का आपके पास मटेरियल अवेलेबल है? Then maximize your personal power. Maximize your personal power involves managing your own energy level, maintain a healthy lifestyle, and optimize the use of your time. So time management is key. Then motivate yourself into action. हर वक्त अपने आप के साथ एक्सरसाइज करनी पड़ती है. अगर नहीं करोगे तो नहीं बात बनेगी. हर वक्त रोज कहते हैं यार मैं क्या कर दूंगा वहां जाके, क्या सब हो जाएगा. नहीं नहीं, you have to do something. फिर आदमी अपने आप को मोटिवेट करता है. And this is how life moves on. So create large chunk of time. It involves scheduling uninterrupted blocks of time dedicated to completing most important tasks. These techniques helps in handling tasks requiring deep concentration. कुछ होते हैं बड़ी deep concentration. यार ये मेरे लिए दो किताब आई है. जैसे गुजरात की एक किताब है, मैं आपको बताता हूँ. आप लोगों ने पढ़ी होगी, आत्मसिद्धि शास्त्र. जहाँ से ये धर्मपुर कहाँ पर है? यहाँ से 300-400 किलोमीटर दूर है. वहाँ पे एक आश्रम, वहाँ से किताब एक मैंने तो अमेज़न से मंगाई थी, मतलब कम है. सो आत्मसिद्धि शास्त्र वो भी बात करता है कि हाउ यू कैन इंप्रूव योर ओन इफेक्टिवनेस इन लाइफ बेस्ड ऑन गीता फिलॉसफी एंड जैनिज्म एंड मेनी अदर फिलॉसफीज. सो उसको पढ़ने के लिए मैं पढ़ता था, फिर या तो नींद आ जाती थी. मैंने कहा कि ऐसे चलेगा ना. अब आप 2 दिन कुछ नहीं करोगे, पहले इसको अच्छे तरीके से पढ़ो. So you have to take out all the things. अब मैं वहाँ जाऊँगा जब मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, so I will take out this time and I will have to do it. So sometimes you have to create that kind of thing. इसके लिए deep concentration चाहिए. जैसे if you remember जो हमने अब आपको let me switch to the strategy.
मैंने कई बड़ी बड़ी बातें बोल के चला गया, मैं मॉलिक्यूल ये वो दुनिया भर की बातें बोल के हम चले गए। अब उसके एक एक बात में घुसने के लिए आपको 3-3 महीने चाहिए उस बात को समझने के लिए कि मैं क्या बोल गया। सो डेवलप ए सेंस ऑफ अर्जेंसी ऑफ, तो इसके लिए वही 80-20 फॉर्मूला है कि आज मैं क्या कर सकता हूं। सो दिस इज अ set the timetable, 7 key steps, define goal, write down, set deadline, standard हर इंस्टीट्यूशन को, हर डिपार्टमेंट को फॉलो करना चाहिए टाइम मैनेजमेंट फॉर्मूला। और ये भी और सिमिलर किताबें और बनने का पढ़ने का इच्छा हो तो ये भी किताबें पढ़ लेना। तो दिस विल हेल्प यू इन इंप्रूविंग योर ओन इफेक्टिवनेस इन लाइफ, इफेक्टिवनेस एट वर्क, इफेक्टिवनेस इन योर प्रैक्टिस wherever you are doing. And this is the matrix of time management. So what is this matrix is? A thing which is important and urgent. A thing which is urgent and is important. Do it first. Focus and get the urgent and important task done. Do it first. Second, not so urgent but important, but must do it. Develop a schedule for that. And third is delegate. What is urgent but less important can someone else help you? आपके स्टूडेंट्स मैन पावर होती है, सारे लोग होते हैं, कौन सा काम किससे करा सकते हैं, सारी चीज खुद ही घेर के मत बैठे रहो। Interpersonal, group working, all these things are very important aspects. And which is not important, not urgent, don't do it. So this is the matrix to move forward as a researcher in an interdisciplinary setup. Otherwise challenges बहुत होंगे। मैं किस्सा सुना रहा था कि एक बार हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज न्यू दिल्ली में एक होम्योपैथिक विंग खोल देते हैं। हमने 2-3 रिसर्चर भी भेज दिए, वो चले भी गए। वहां पे जो हेड था वो कहता है यार आज इनको हम सिखाई देते हैं, रिसर्च की चिड़िया का नाम है। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे ऐसे केसेस दे दिए। दे वर सेल्फ कॉन्फिडेंट विद अ लार्ज ब्लाइंड स्पॉट कि इस केस का होना क्या है उनको पता है नहीं। उन्होंने मटेरिया मेडिका पढ़ी हुई है, रेपर्टरी पढ़ी हुई है कि ऐसा होता है, हम कैंसर ठीक करते हैं, कैंसर होता है, ऐसा होता है, तो वो हाँ जी हम ये भी कर देंगे। अच्छा ये कर दोगे आप? उतना सीनियर आदमी कह रहा है, एलोपैथिक डॉक्टर, आपको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बुला के कहेगा यार ये कैसा तुम ट्रीट कर लोगे? हाँ ऐसे तुम रोज करते रहते हैं, चाहे किया नहीं किया, जो बोलना है बोल मत दिया। जितना भी अंदाजा था उन्होंने कहा अच्छा ले भैया तुम 1 ले, 2 ले, 3 ले, कुछ नहीं हुआ, फ्लॉप शो के वापस आ गए। तो ना आदमी को उतना बोलना है, उतना करना है जो कर सकता है, पर ओवरटली कॉशियस भी नहीं होना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है खासतौर पे। और इस लेक्चर की आज की वैल्यू ही आप लोगों के लिए ये है कि नाउ यू आर गोइंग टू एंटर इनटू ए इंटरडिसिप्लिनरी सेटअप, हाउ टू गो अबाउट इट नाउ। व्हाट इज, अब ये कुछ ज्ञान की बातें हैं, सिर्फ आप लोगों ने सुनी होंगी 10 बार। दिस इज अबाउट इफ लाइफ इज 10% व्हाट हैपेंस टू अस एंड 90% हाउ वी रिस्पॉन्ड। ये सारे ज्ञान की बातें रोजाना व्हाट्सएप के ऊपर, व्हाट्सएप इंडस्ट्री में आप लोग पढ़ते रहते हो, पर इसके ऊपर जब आ जाए जरा सा ध्यान कर लो यार कि वेयर आई स्टैंड एज पर दिस। तो इंट्रोस्पेक्शन हल्का हल्का करते रहो। राइट थिंकिंग, राइट लिविंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये मैंने इतने टाइम में सीखा है। जहां भी मैंने जरा सी भी गलती की है ना, उसने प्रॉब्लम कभी ना कहीं लेटर और की, चाहे वो हेल्थ फ्रंट पे हो चाहे मॉरल फ्रंट पे। यू हैव टू बी वेरी नो रियल एक्सेलेंस कम ओनली बाय रनिंग। और अगर कहीं आपको शॉर्टकट रिसर्च, शॉर्टकट पत्तेबाजी करके कोई छोटा मोटा पेपर पब्लिश भी हो रहा है तो ना ही पढ़ो उसके चक्कर में, तो अच्छा है। ये रिसर्च में प्रॉब्लम आती है बड़ी सारी ना, यार ये तो कुछ तो छापो यार, नेट कराना है यार, कुछ तो करो यार, कुछ तो करो यार। तो करते करते फिर आदमी कुछ भी छाप देता है, फिर कई बार उसके प्रॉब्लम भी आती है।
कई बार अनोइंगली होता है, कई बार नोइंगली भी हो जाता है। मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ ही हुआ है जिसके बाद स्टूडेंट्स आए, ले आए कि सर ये छाप रहे हैं, हाँ ठीक तो लग रहा है यार, ये तो बहुत ही बढ़िया, हाँ ये तो ठीक है। आपने खुद तो गए नहीं गए, अच्छा सर आपका भी नाम लिख दें, हाँ लिख दो, ठीक ही लग रहा है। अब वो छप भी गया। अब बाद में जब क्रिटिसिज्म आया, अच्छा ये तो आपने भी नहीं सोचा था, तो ना सब्स्टिट्यूट नहीं है मतलब। तो आज से अपने आप डीप थिंकिंग, डीप मेडिटेटिव मोड में चले जाओ, पढ़ना लिखना शुरू करो, रिसर्च। आप पारुल यूनिवर्सिटी, आप एक, मैं देख रहा था रिसर्च का एक कोर्स भी करा रहे हो सबके लिए, हाँ जी, तो आपको सारे का सारे कोर्स ज्वाइन कर लो, जो भी वो पढ़ा रहे हैं पढ़ो, मतलब जहां से जो मिले पढ़ो, देयर इज नो अदर वे आउट। नाउ सो ए थॉट reap an action, so an action reap a habit, so a habit reap a character, so a character reap a destiny। तो आपकी डेस्टिनी अपने हाथ में, सोच बदलो, संसार बदलो, भली स्थिति है, और ये रोज हम पढ़ते रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस गोल्डन एग पैराडाइम। The more you produce, the more you do, the more effective you are. Effectiveness is a function of what you produce, the golden egg, and the producing assets or capacity to produce them. होता क्या है कि अब एक डॉक्टर के लिए, एक रिसर्चर के लिए क्या है वो गोल्डन एग? अंडे तो नहीं है और ना ही गोल्डन। तो ये आपको एनालाइज करना है अपनी लाइफ कि am I producing enough results? Whatever I am doing, थोड़ी देर के लिए इंस्टीट्यूशन को छोड़ भी दो, घर पे भी am I doing enough? and what are those areas? तो उस सोच के अंदर आना होगा। कितने रिसर्च पेपर निकाले गोल्डन एग्स, कितने प्रोजेक्ट शुरू किए, ये सारे हैं। What lies behind us and what lies before us are tiny matter compared to what lies within us। जो पहला शुरुआत जिस सेंटेंस से हमने की थी, अपना दिल जब खोजा तभी पता लगा क्या हुआ, बाकी सब तो जो चल रहा है चल ही रहा है। So things which matter most must never be at the mercy of things which matters least। मतलब जो इम्पोर्टेंट टास्क है उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि उसमें जब आप रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करोगे, जब आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टडीज में जाओगे, तो कई ऐसे आपको आइडियाज आएंगे, यार इसको करके छुट्टी करो, तो वो आप देखोगे कि ऑल दोस थिंग्स आर गोइंग टू अफेक्ट यू लेटर ऑन। तो ऐसा ना करो, ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, without further ado, I would just like to thank you all for coming. And as we draw to the close of our enlightening event, I would like to extend my heartfelt gratitude to each and every one of you for coming, because your presence here have made this event a resounding success, and your participation and active engagement is well appreciated. I would like also to express our sincere appreciation to Dr. Raj K. Manchanda. Thank you, sir, for gracing us with your profound knowledge and expertise. And I'm very sure that your insights have undoubtedly enriched our understanding and inspired us to delve even deeper. I would also like to appreciate the organizers and staff who have worked tirelessly behind the scenes to ensure that this event is a success. Your dedication and hard work have not gone unnoticed. Last but not least, I would like to thank Parul University's Faculty of Homeopathy for providing us with a platform. And thank you to you all once again. And we look forward to more enriching gatherings like this in the future. Thank you all. Enjoy the rest of your day. Really?